platform of Shiksha Niketan. So we all know that we are approaching for our board exams. So today we will revise English syllabus of class 11th for board exam. So let us revise according to our board pattern. I hope that you can learn it better, and I wish that you all can score good marks in your board exams. So let us start. So beta, we have total weightage of English paper for your 11th board exams is 80 marks. So let us revise how these marks are distributed in different sections. How can we learn better and how can we score better in our upcoming exams? So in English we have three main sections, as you all know. We have section 1, that is section A, that is reading comprehension. Then we have section B, that is writing comprehension. Then we have section C, that is literature. So beta, once again let us learn that our English board paper divided into three main sections. One is section A, then section B and section C. Section A is reading comprehension. In that it includes two questions on basis of your reading skills, and then we have question number second section, that is section B, that is writing comprehension, that help us to evaluate our writing skills, and the section C is the literature part. So let us divide the marks distributed in this same. So section A is of 20 marks, section B is of 30 marks, and section C is of 30 marks. So when you are going to attempt the paper, you must understand that how we have divided sections in our exams and how we have to learn for our upcoming board exam for English paper. So ये आपको सबको पता ही है. You all must remember and revise that we have three basic sections in our board exam: section A, section B, and section C. Section A evaluates reading skills, section B evaluates writing skills, and section C is literature part. So let us start with section A. What kind of question we have in section A and how 10 marks distributed in question number 1. So let us start, beta. So reading comprehension is of 20 marks. Question number 1 is note making. Question number 2 is reading comprehension. It is of 10 marks and this is of again 10 marks. So beta, note making is of 10 marks.
Now the focus is on how we can get 10 out of 10 in note making. Most of the student, I'm sure that all of you have learned it better, but make sure division of marks in this note making, because division of marks in note making is most important. Students sometimes didn't take much interest that how they get 10 out of 10 in note making. According to them, they can write and they can easily get 10 marks, but it is not like that, because your 10 marks is divided in note making. How is it? Let us learn. Beta, in first question comprehension part, you will get 400 minimum words paragraph on any topic, and you have to select, you have to sort out, you have to make notes out of this 400 words, and important information you have to find out, and then you write it in note forms. अगर आप इस 400 वर्ड के पैराग्राफ को सॉर्टिंग करके इसकी इंफॉर्मेशन को निकाल के प्रॉपरली लिख पाते हैं इन अ वेरी प्रॉपर मैनर अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट, देन यू कैन गेट 5 मार्क्स इन दैट. बेटा आपकी नोट मेकिंग की जो 10 मार्क्स है दैट इज डिवाइडेड इन, like note making is of 5 marks, then you have abbreviation included in it. इन दोनों के लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे. Then you have summarize, 4 marks, and title to the summary, 1 marks. So your 10 marks of this note making is divided into 3 parts. One is note making, second is summarizing, and third is title. Mostly student sometimes didn't take interest that how this division has been taken. So you must learn that note making is of only 5 marks. Summary of 80 words only. ये जो 400 words का पैराग्राफ है आपने इसको 80 words में लिखना है minimum. Important notes को you have to jot down in a single paragraph. Then you can make a summary of this paragraph, and it will give you 4 marks. ये आपके 4 नंबर के. और then you have to add title to this summary, and it is of 1 mark. So this division is like that. Note making, some helpful tips for note making is that you have to avoid long sentences, helping verbs, preposition, complete sentence structure you can miss, but you have to give information. You have to give your information, like जैसे point 1, then you make sub points of this 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, like 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. Minimum for 5 marks you can write 4 main points and then subheadings, 4 headings and then subheadings, and you can also add abbreviations to that to make it short. आप इसके साथ में इसको abbreviations भी add करेंगे ताकि आप अपने लॉन्ग सेंटेंसेस को या लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग को एक शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग में चेंज कर पाए. इफ यू डू इट इन वेरी प्रॉपर मैनर देन यू विल गेट 10 out of 10. So revise and learn how to do note making for board exams. I hope that part is clear. Now let us move to the question number 2 of your board, that is comprehension paragraph. Again, question number 2 is of your board paper is on a reading, based on reading skills.
that is a comprehension paragraph of 400 words, followed by 10 short questions. You have to answer short questions according to the knowledge that is given in the paragraph, and then you have to write according answers according to the questions, that what information is given in the paragraph, above paragraph. तो बेटा 10 क्वेश्चंस आपके पैराग्राफ में दिए, आपने वहां से इंफॉर्मेशन को, बट हेयर मैटर्स योर रीडिंग स्किल. आपकी रीडिंग स्किल कितनी बेटर है, हाउ बेटर यू कैन अंडरस्टैंड एंड evaluate the paragraph, then you can write the answers. So this is a complete reading comprehension, that is 20 marks of your section A. That includes two important questions, that is reading comprehension and note making. So if you can do practice of that, I am sure that you get complete marks in the first section. So let us move forward to the section B. Section B की तरफ चलते हैं. That is writing comprehension. Question number 3 of your board paper is on advertisement. Then you have on notice or poster. Out of 2, you have to attempt any one, 4 marks. Beta, you will get question on advertisement, you will get question on notice, or you will get question on poster. Word limit for this question is 50 words. You have to complete your answer in 50 words only, and it scores 4 marks in board exam. Yes. So for your notice, let us revise the format. That someone is asking for format. Yes, I'll help you to revise. Beta, we have different advertisements for paper, like we have situation vacant, we have to let, we have matrimonial, we have obituary, we have travel and tours, we have missing person, we have sale and purchase. So different types of advertisement we can include in this. So for this we have to write simple. You have to box your information. Here it is the title, either it is wanted or required. Then you have to give content of the advertisement in 30 to 40 words, and then closing. This is for advertisement. टॉप पे आपने जो भी रिक्वायरमेंट है, चाहे वो टू लेट है, आपके पास स्पेस है रेंट के लिए, आपके पास सेल है, आपने परचेज करना है कुछ चीज, आइदर एनीथिंग मैट्रिमोनियल और ऑब्ituary, कोई भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं, यू हैव टू गिव टाइटल फर्स्ट. ये आप किस पर्पस के लिए एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं, इट शुड बी विजिबल इन बोल्ड लेटर्स. और इसका फॉर्मेट आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, इसको हाईलाइट कर सकते हैं, एंड देन यू हैव टू गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन इन दिस बॉक्स in paragraph form, that is in 40 words, and then you have to close and you have to write the name of giving the agency who is writing the advertisement. तो ये आपकी advertisement के लिए रहेगा. Then you have write notice. Here it is the
Beta, this is the format for notice writing. First of all, you have to give name of institution at the top, and then you can give date, write notice in center. Then you have to highlight the subject on which you are citing the notice, and then you give content related the same. Then you have to close with name and designation. This is format for 4. It includes 4 marks in your board again, and then you have to give poster. So इन तीनों में आपको 4 नो नोटिस में सैल्यूटेशन नहीं होती है बेटा, नोटिस में सैल्यूटेशन नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको अपना नोटिस फ्रेम करना है। यू कैन रिवाइज एंड चेक। नोटिस में सैल्यूटेशन नहीं आता, सैल्यूटेशन इज फॉर लेटर राइटिंग। तो आप एक बार इसको रिवाइज करें, चेक करें और मेक श्योर करें, बिकॉज आउट ऑफ 3 टॉपिक्स एडवर्टीजमेंट, नोटिस एंड letter, you will get only 2 in your board paper, or either in for pre-board also, and you can attempt only 1. इनमें से आपने एक ही अटेम्प्ट करना है, बट मेक श्योर कि फॉर्मेट आप करेक्ट करें, बिकॉज इसके फॉर्मेट के मार्क्स रहते हैं बेटा। सो लेट अस मूव टू द सेकंड पार्ट, दैट इज लेटर राइटिंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। You will get official letter, formal letter for 11th class board exams in your board paper. So beta, format is much important because your number of this letter writing scores 6. You will get 6 marks for letter writing. Yes, and this 6 marks further divided into different parts. So let us revise how these 6 marks has been divided in your format. For address, it is 1 mark. For salutation, it is again beta, your letter writing 6 marks has been divided into this for format checking. So your address is of 1 marks, salutation is of 3 marks, content of the letter, that is the body of the letter, is of 3 marks, and closing is of 1 marks. तो ये 3 नंबर में आपका जो ये 6 मार्क्स में आपका जो मार्क्स डिवीजन है लेटर राइटिंग का, ये डिवाइडेड है। इसको आपने ध्यान से देखना है और चेक करना है। सो मैं इसका फॉर्मेट एक बार आपसे शेयर कर लेती हूँ, आप एक बार इसको ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट इज फॉर्मेट फॉर लेटर राइटिंग। सो बेटा सबसे पहले आपका सेंडर्स एड्रेस आएगा, देन यू हैव डेट, देन addressee address, then subject, salutation, content, then close. बेटा you have to write in the same pattern for formal letters. इनफॉर्मल में आपका सब्जेक्ट नहीं देगा, तो अगर आप इसका प्रॉपर फॉर्मेट लिखते हैं देन यू कैन, हाँ, दिस द वर्ड लिमिट फॉर दिस इज मिनिमम
150 words, 120 to 150 words for 6 marks question. So बेटा you have to attempt it accordingly. Make sure कि आप क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ें, उसके कंटेंट को आराम से चेक करें, and then you can write formal letter or the letter you have given in your exam. So make sure कि आप इसकी फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए इसके आंसर्स को अटेम्प्ट करें, राइट. Then we have next question for your board exam, that is question number 5, email writing. Email writing you have in your exam, but make sure learn the exam you can learn that this email is for personal only. बेटा इसमें informal mail आएगी, formal mail आपको नहीं आएगी, official mail आपको नहीं लिखनी है. You have to write only informal or personal mails to your parents, aunts, friends, cousin. So इस तरह की mails आपको लिखनी है जिसके जो word limit है that is 80 word and जिसका mark scoring होगा 4 marks. Question number 3 and 5 both offer 4 marks and question number 4 is of 6 marks. तो ये ध्यान से आप इसको चेक करेंगे और लिखेंगे अकॉर्डिंगली. देन इसके फॉर्मेट में make one thing sure that when you are writing informal or personal mail, but your words should be chosen properly. कई बार बच्चे जब इनफॉर्मल मेल्स अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें कहीं लैंग्वेज जो है दे डिडंट यूज अ कंप्लीट सेंसिबल लैंग्वेज. तो बेटा इसमें आपने थोड़ा ध्यान रखना होता है कि जब आप लैंग्वेज यूज करें तो ऐसा लगे कि ये किसी टीचर के पढ़ने के लायक है, बट यू कैन the tone should be informal, your tone can be informal but choice of word can be genuine. आप एक genuine words के साथ इसकी use करेंगे but it is for personal use. पर्सनल मेल आप इसमें करेंगे दैट इज इनफॉर्मल. तो टू CC BCC इसमें आप मेल ID देंगे एंड देन राइट डाउन द मेल फॉर बर्थडे विश और अपोलोजाइज फॉर समथिंग, फॉर आस्किंग समथिंग. तो आप उसको चेक करें एंड देन यू कैन राइट. So question number next is 6. That is a long piece of writing skill. Yes, this is a long piece of writing for your board paper, beta. It scores 8 marks in your board exam, and also okay, I'll help you to revise justification of the title address. Okay, sure. So after a few minutes, I am going moving forward for section 3, and then I'll help you to learn there. Okay. Article debate. Then beta next is speech report, and next is narrative.
आपने इसमें वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है, फॉर्मेट का ध्यान रखना है, एंड योर राइटिंग शुड बी वेरी मच प्रॉपर सो दैट योर कंटेंट कैन बी इजिली अंडरस्टूड बाय द इवेल्युएटर। बच्चे इसमें सिर्फ लिखते हैं, बट फॉर्मेट का ध्यान रखें। डिबेट का फॉर्मेट क्या है, स्पीच का फॉर्मेट क्या है, जो आपके फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें आपने प्रॉपर ध्यान से इसको मेंशन करना है ताकि आपके आंसर्स समझ में आए और आप इसको अकॉर्डिंगली फॉर्मेट के हिसाब से अटेम्प्ट करें। टाइटल बाय लाइन इसकी प्रॉपर होनी चाहिए, देन योर इंट्रोडक्शन, देन योर क्लोजिंग शुड बी वेरी मच प्रॉपर so that you can learn and revise it. It scores 8 marks in your board exam. Word limit can be 180 words. तो बेटा 180 वर्ड्स के लिए आपने कम से कम प्रॉपर यूजेज के साथ इसको लिखना है और मेंटेन करना है, अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट। रिपोर्ट राइटिंग पास्ट टेंस में जाएगी, आपकी रिपोर्टर का नाम आएगा, डेट और वेन्यू ऊपर आप फर्स्ट पैराग्राफ में ही मेंशन करेंगे। डिबेट के लिए आपकी फॉर द मोशन या अगेंस्ट द मोशन जा रहे हैं। स्पीच के लिए इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल किस टॉपिक पे आप दे रहे हैं, तो प्लीज go through the formats of these topics and titles so that you can learn. Only one question you have to attempt out of these 5, but in your paper there may be article or debate or speech or report. It can't be प्रिडिक्टेबल कि पहले क्या आपके पेपर में आ सकता है। यू हैव टू रिवाइज इट अकॉर्डिंगली कि आपके पेपर में किस चीज पे आपका क्वेश्चन होगा और आप उसको रिवाइज करेंगे। सो दिस इज सेक्शन बी। सो सेक्शन 1 एंड सेक्शन बी बोथ स्कोर्स 50 मार्क्स। सेक्शन ए इज ऑफ 20 मार्क्स एंड सेक्शन बी इज ऑफ 30 मार्क्स। तो बेटा आपके ये तीनों पेपर जो है ये इस तरह से रिवाइज होंगे। यू हैव टू लर्न रिवाइज इट बेटर। सो let us move forward for section C of your board paper. You have two books that is in your literature part that includes an 11th class board exam. One is Hornbill and other is Snapshot. Get a Hornbill book scores 19 marks in your board paper and Snapshot score 11 marks in your board paper. So let us further divide this marks division. It includes poetry and short stories. Poetry is of 10 marks. Poetry is of 10 marks. And शॉर्ट स्टोरीज इज ऑफ 9 मार्क्स। बेटा पोइट्री आपकी 9 मार्क्स की आती है, वो कैसे आपने प्रिपेयर करनी है वी विल डिस्कस। एंड शॉर्ट स्टोरीज के क्वेश्चंस कैसे आपने डिस्कस करने हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। देन वी विल गो फॉर लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग, जिसके लिए पूछा गया है कि हमें क्वेश्चन की जस्टिफिकेशन ऑफ द टाइटल एड्रेस। ओके, वी विल डिस्कस दैट। पोइट्री इज ऑफ poetry is of 10 marks and short stories of अगेन बेटा पोइट्री आपके जो क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे, वन इज कॉम्प्रिहेंशन पार्ट ऑफ पोइट्री एंड अदर इज शॉर्ट आंसर राइटिंग। आउट ऑफ 3 you have to attempt 2 questions. You will be given with 3 questions of poetry and you have to attempt only 2 of 3 marks. डिस्कस करते हैं इसको।
Oh. Before starting the literature, let us learn that in writing part we have one more important question, that is edit the paragraph. This edit the paragraph you will be given with 100 words paragraph. Out of this 100-word paragraph you have to do editing. आपने बेटा इसकी editing करनी है. आपने किस किस चीज पे ध्यान देना है? One is determiners, second is tenses, third is punctuation, fourth is modals, fifth is conjunctions, next is prepositions, out of these you will be find out or edit any 8 mistakes of the given paragraph and you will get 1 marks for each editing. So it scores 8 marks in your board paper. It highly depends on the grammar knowledge of basic knowledge of grammar. So you have to correct the tenses, you have to check the determiners, that includes your articles, modals, punctuation, you have to write preposition and conjunction. So in सब में से बेटा आपने mistakes को find out करना है and then you will be able to score 8 out of 8 marks in your board exams. तो ये सारे मिला के आपकी section B complete करेंगे, that is of 30 marks. So let us forward that we are on the topic poetry. On poetry beta, first question is, that is question number 8 in your exam is on comprehension paragraph. आपके पेपर में एक comprehension paragraph आएगा. पोइट्री, इन सब पोइट्री के किसी भी टॉपिक से एक पैराग्राफ ले लिया जाएगा, that is called stanza and it is followed with 4 questions. एक stanza मिलेगा आपको followed by 4 questions. You have to answer these questions by reading the paragraph or the stanza, and it is based on the basic knowledge of poetic devices or on the name of the writer, name of the poet and the poem. तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि ये वाला जो स्टेंजा है ये किस पोएम से लिया गया है और इसका जो ऑथर है वो कौन है. ये आप प्लीज प्रॉपरली पढ़ ले. फोटोग्राफ इज रिटन बाय शर्लेट ऑल्सन, द लेबनम टॉप इज रिटन बाय टेड हग्स, Voice of Rain is written by Walt Whitman, Childhood is written by Max Newton, Father to Son is written by Elizabeth Jennings. तो इनके कंटेंट को, पोइटिक डिवाइसेस को, स्पीचेस को प्रॉपरली आप लर्न करें, रिवाइज करें, ताकि आप ये 4 नंबर जो है, यू हैव टू राइट आंसर इन मिनिमम 20 वर्ड्स. शॉर्ट आंसर क्वेश्चन लिखने हैं बट इट इज बेस्ड ऑन द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कि आपकी नॉलेज और इनकी पोइटिक डिवाइसेस के ऊपर भी क्वेश्चन आता है इसमें. यू हैव टू लर्न एंड रिवाइज इट बेटर. So you can score 4 out of 4. Next question, that is part B of this the same. इसी का बेटा part A रहेगा ये stanza and part B इसका रहेगा
3 questions. Out of 2 you have to attempt only 2. 3 questions रहेंगे for 40 to 50 words. शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस यू हैव टू राइट फॉर हॉर्नबिल. तो 40 to 50 वर्ड्स में आपने आंसर कंप्लीट करना है. दैट इज ऑफ 3 मार्क्स. 2 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं. इट स्कोर 6 मार्क्स. तो 6 और 4 आपके 10 नंबर होते हैं पोइट्री की. तो अगर आप 10 नंबर की पोइट्री प्रॉपर कर लेते हैं देन यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम. तो उसके लिए आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे और इस चीज को प्रॉपरली रिवाइज और लर्न करेंगे. देन वी हैव शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ हॉर्नबिल बुक. आपके जितने चैप्टर हैं, डिस्कवरिंग ट्रूथ, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, देन वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई एंड अदर चैप्टर एलियन प्लेनेट. तो इन सब बेटा, इन सब चैप्टर्स में से सिल्क रोड है आपका, एडवेंचर है, इन सब चैप्टर्स में से आपके आप 5 क्वेश्चंस आएंगे. यू हैव विल बी गेट दैट इज क्वेश्चन नंबर 9. short answer question 40 to 50 words. Give to the point answer of this question, but what we have found that sometimes student give complete information of the chapter in this short question. That cannot be required. आपके इसमें लॉन्ग इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ती है बेटा. 40 to 50 वर्ड्स में आपने जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी का आंसर आपने करना होता है. इधर उधर की इंफॉर्मेशन या चैप्टर को डिस्क्राइब करना या उसकी समरी लिखना, that is not justified in this ninth number question or short answer question, because you have to answer only the given information that is asking for the in the question. तो मोस्टली स्टूडेंट कई बार तो बहुत शॉर्ट लिखते हैं स्कोर, कई बार बहुत ज्यादा लॉन्ग लिख देते हैं जिसके लिए आपकी मार्किंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें कि 40 to 50 वर्ड्स में यू हैव टू आंसर द long question, short question in 40 to 50 words and to the point answer should be given. जिस बारे में पूछा गया है you have to answer accordingly. इधर से उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. So it scores 3 marks each question. 3 into 3 9 marks. तो 9 marks का बेटा आपका ये क्वेश्चन रहेगा. तो if you learn 9 marks from your Hornbill book, don't go for long piece of writing in this book. इस बुक में हॉर्नबिल में आपको लॉन्ग चैप्टर्स या लॉन्ग आंसर्स की प्रिपरेशन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज दैट इज गिवन बाय द बोर्ड दैट इट will help you to score only short question answers from this book. So prepare only short answer for board papers. बोर्ड पेपर्स के लिए इस बुक में से आप सिर्फ शॉर्ट पेपर्स ही तैयार करें, शॉर्ट आंसर्स ही तैयार करें और साथ में आप पोइट्री तैयार करें. देन यू विल बी एबल टू स्कोर complete marks. So let us move to the question number 10 of your book, that is snapshot. Long answer questions. Snapshot beta, we have chapters. Listen carefully, I am going to learn it, revise it. You have first chapter, the summer of white beautiful horse. Then you have address, the address, third is birth, yes, tale of Melon City. Beta, these questions
these chapter scores 6 marks in your board paper. इन चैप्टर से आपके पेपर में 6 marks का पेपर क्वेश्चन आएगा. You will be given with any 2 question with choice. Internal choice आपको मिलेगी किसी भी 2 question में, either on the title, summary, theme, humor, any type of question will be given. तो आप लोगों ने इसके ऊपर मिनिमम जो वर्ड लिमिट रहती है इसकी 180 वर्ड्स रहती है. आंसर शुड बी फॉर 6 marks इज 180 वर्ड्स. आपके 6 marks के क्वेश्चन के लिए बेटा 180 वर्ड्स का आंसर होना जरूरी है. समर ऑफ वाइट ब्यूटीफुल हॉर्स एड्रेस, अभी एक बच्चे ने पूछा था कि justification of the title of the address. As we have learned in the address chapter that the girl, when she reached her address that is given by her mother, she found about the reaction. Post war and pre war दोनों के बारे में बात हुई है बेटा, and that relevance is given through the address because she remembers the address and when she reached their Marconi state and she found that the behavior of the lady was not justifiable after war, because before war is something else, because she visited their place and she had that association with her mother. She loved her behavior. She used to pick some family items or grocery, or I can say crockery from their place. That was, they hosted her as a guest. But after post-war, when she left everything, when she loses her, lost her mother, when she lost her place, when she lost her family members, her associations with everyone, at the end she left with nothing. So that is why the writer has uses or chooses the topic or the title address for this chapter, because address is a the address that revolves around her make her realize that how people change according to the time and situation, that um, when hard times or difficult times come to someone, people suddenly changes their behavior and their situations. So ये जो address है, that is a apt title we can say, because it helped the girl to learn about the different behavior or the post-war behavior of people or her relatives or her associates ऑन हर मदर बिलीव्ड मच. जिसके ऊपर उसकी मदर बिलीव करती थी, उनके ऊपर उसकी मदर का ट्रस्ट था. उसकी मदर के जाने के बाद they lost everything and the girl found how that lady changes simultaneously. So this title is justifiable. Similarly, you will get question on birth chapter about the title or the I can say character sketch of Dr. Andrew Manson, her skills as a doctor or a human, how his one night act or her operation that he did very skillfully on that day or that night changes her life, make her recognizable throughout the state. तो ये सब इसमें आपने इंक्लूड करना है. इनके टाइटल को, थीम को, समरी को बेटा बड़े ध्यान से पढ़ें, बिकॉज यू विल बी गिवन विद 1 क्वेश्चन. मेक श्योर कि जब आंसर लेके इसका तो इंट्रोडक्शन और क्लोजिंग जरूर करें इस लॉन्ग में, बिकॉज ये जो लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं ना, इनमें आपका प्रॉपर इंफॉर्मेशन जानी चाहिए, तभी जाके आपके मार्क्स मिलते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट स्टूडेंट्स डू इन द लॉन्ग क्वेश्चन, दे ओनली गो फॉर द समरी ऑफ द चैप्टर. कुछ भी क्वेश्चन पूछा है वो सिर्फ समरी के ऊपर ही आंसर कर देते हैं, पूरी कहानी लिख के आते हैं. दैट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द टीचर टू गेट इंफॉर्मेशन दैट इज आस्किंग इन द क्वेश्चन. तो वो वहां पे मार्किंग करनी बड़ी टफ हो जाती है टीचर के लिए, बिकॉज आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो पीस ऑफ राइटिंग एक्चुअल नहीं मिलती जो वो चाह रहे होते हैं. तो फॉर दैट यू हैव टू राइट आंसर, बट दैट इज बेस्ड ऑन द स्टोरी. बट उसने जो पूछा, अगर उसने थीम पूछा, यू हैव टू राइट द थीम. अगर उन्होंने आपसे उसका समरी पूछी है तब आप समरी के ऊपर जाएं. किसी का करेक्टर स्केच पूछा, आप करेक्टर स्केच के ऊपर जाएं. तो यू हैव टू राइट इट इन अ मैनर दैट यू कैन लर्न इट और राइट इट बेटर. 180 वर्ड्स का ये आंसर आपका होना चाहिए. लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग, सिर्फ ये 4 चैप्टर्स ही 6 मार्क्स के लिए आपने तैयार करने हैं. एंड फॉर last question, that is question number 11 of your syllabus, is play of snapshot, that is Mother's Day.
Do not skip this chapter in your paper. Don't even think to skip this chapter in your board exam. मदर्स डे का चैप्टर आप अपने बोर्ड एग्जाम के लिए स्किप नहीं कर सकते बिकॉज दिस सिंगल चैप्टर स्कोर 5 मार्क्स. बेटा इस सिंगल चैप्टर से आपके 5 नंबर पेपर में आएंगे. जैसे वी हैव ऑलरेडी लर्न समर ऑफ वाइट ब्यूटीफुल हॉर्स, बर्थ, देन वी हैव टेल ऑफ मेलन सिटी एंड एड्रेस. दीज 4 चैप्टर स्कोर 6 मार्क्स. इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको एक आ सकता है 6 मार्क्स के लिए 11th. बट फॉर दिस क्वेश्चन मदर्स डे ये अकेला चैप्टर स्नैपशॉट का स्कोर करता है बेटा 5 मार्क्स. ये अकेला चैप्टर आपका 5 मार्क्स का आएगा. तो जब आप 5 मार्क्स के लिए इसमें जाएंगे तो यू हैव टू लर्न इट. डोंट स्किप दिस चैप्टर बिकॉज अकेले क्वेश्चन अकेला ही चैप्टर आपको 5 मार्क्स की स्कोरिंग कर रहा है बोर्ड एग्जाम में. वर्ड लिमिट इज अगेन 150 to 180 वर्ड्स. 150 to 180 वर्ड्स में बेटा इसमें कंपेयर एंड कंट्रास्ट, करेक्टर स्केच ऑफ मिसेस फिजराल्ड एंड मिसेस पियर्सन, plight of female in the family important है. How you can justify the title of the chapter or the play Mother's Day. You can identify humor and satire of this chapter. Satire और humor को कैसे blend किया राइटर ने. You have to write it because it is a mockery when we learn it, when we read it, but at the end we come to know that writer has highlighted the very important situation of females in the present society. उनके ऊपर बात की गई है तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. करेक्टर स्केचेस ऑफ मिसेस फिजराल्ड एंड मिसेस पियर्सन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बट द स्टाइल ऑफ राइटिंग शुड बी जस्टिफाइबल. आपका स्टाइल ऑफ राइटिंग अगर कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर रहे हैं तो उसमें भी जस्टिफाई होना चाहिए और अगर आप करेक्टर लिख रहे हैं तो उसमें भी आपका स्टाइल ऑफ राइटिंग जो है वो जस्टिफाई होना चाहिए. तभी जाके आप बेटा इसमें मार्क्स स्कोर कर पाएंगे. अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू स्कोर मार्क्स इन द एग्जाम्स. मार्क्स लेना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा और आपके लिए आने वाले टाइम में प्रॉब्लम होगी. सो वी हैव डिस्कस्ड द कंप्लीट distribution of marks for board exams, that is क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 11 कि आपका सिलेबस जो है वो पूरे एग्जाम में किस तरह से डिवाइडेड है. आपने किस तरह से हाँ जब आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं व्हेन यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट योर बोर्ड पेपर प्लीज गो फॉर सेक्शन वाइज अटेम्प्टेशन. कोशिश करें कि जिस सेक्शन का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उस सेक्शन का ऊपर आप सेक्शन लिखें. क्वेश्चन नंबर प्रॉपर होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए एंड एट द एंड यू कैन मेक द मार्जिन्स. तब जाके थोड़ा सा इवेलुएटर के लिए भी इजी रहता है कि आपको वो क्वेश्चन नंबर के हिसाब से मार्क करें. कई बार तो बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, समटाइम्स स्टूडेंट्स फॉरगेट टू राइट द सेक्शन. उसकी वजह से भी कई बार प्रॉब्लम हो सकती है. क्वेश्चन स्किप ना करें, टू द पॉइंट आंसर करें. फॉर्मेट्स, राइटिंग स्किल के फॉर्मेट्स पे बहुत ध्यान दें बिकॉज फॉर्मेट्स के अपने नंबर हैं, फॉर्मेट्स की मार्क्स हैं. सेक्शन सी में लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्टेशन के लिए इंट्रोडक्शन लिख लें प्रॉपरली. किस चैप्टर का क्वेश्चन है, उसका आंसर्स क्या है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप उसके पैराग्राफ्स बनाए, डिफरेंट पैराग्राफ्स एंड एट द एंड you will write the conclusion. For short question you need not to write the complete information of the chapter, you have to give to the point answer according to the question. शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने टू द पॉइंट आंसर लिखना होता है. चैप्टर की इंफॉर्मेशन आपको देने की जरूरत नहीं पड़ती. जो पूछा गया है उसी का आंसर 40 to 50 वर्ड्स में दे, then you will score 3 marks. And for poetry, poetry title, author, poetic devices प्रॉपरली लर्न करें बिकॉज 1 into 4 जो मार्क्स हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन के, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 के, दैट इज बेस्ड ऑन द बेसिक लर्निंग. लिटरेरी डिवाइसेस और पोएटिक डिवाइसेस पे क्वेश्चन आ सकता है आपका, ऑथर पे क्वेश्चन आ सकता है. तो प्रॉपरली स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करने हैं. टाइटल को अंडरलाइन जरूर करना है, आपने स्पेलिंग्स का ध्यान रखना है, तब जाके इंग्लिश में आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे. सिमिलरली रीडिंग स्किल्स, नोट मेकिंग की, समटाइम्स स्टूडेंट्स in pre-boards first or second I can say sometimes they write on note making in a paragraph form. Please don't go for that. Do the format. Please check the format of each question because your syllabus is very much simple as per JK Bose because you have to attempt only 11 questions. Yes, I can say sometimes student skip their paper because of the length of the paper. So
Beta, read it properly, learn it properly, and if you have doubts, you can ask. We will help you to learn it better. All the best from our side. Have a nice day. Thank you.